Okay, let me have to continue again. Microbial anatomy and physiology. In our previous class, we were talking about bacterial cell wall and some foreign proteins which are present in outer membrane of the bacterial cell. So today we have to talk. Today we have to talk about comparison between gram-positive bacterial cell walls as well as gram-negative cell walls. This one is gram-negative bacterial cell wall, and this one is gram-positive cell wall. And a small fragment from cell wall has been taken away. Has been taken away, a small fraction, and microscopically through electron microscope has been explained. If you will see over here, most of the structures are common. In gram-positive cell wall is thick. This is gram-positive bacterial cell wall made up of peptidoglycan. And here, if you will see cell wall, there is very thin, made up of peptidoglycan. And outside of the bacterial cell wall, if you will see in gram-negative, there is a membrane, which is outer membrane there. And it is composed, it have polysaccharide, it have foreign protein, it have protein, and it have lipid bilayer, according to fluid mosaic model. It have two layers, lipid layer outer layer, lipid inner layer, protein, foreign proteins which are responsible for the transportation of different material from outside to bacterial cell, and the polysaccharide and outer membrane. But here if you will see in gram-positive bacterial cell, it is teichoic acid, lipoteichoic acid, which is from outside of the bacterial cell to inside of the bacterial cell wall up to cytoplasmic membrane. This is also teichoic acid and this is teichoic acid. If you will see inside, again there is one thing is similar. Pre-plasmic space between cell wall and the inner cell membrane or cytoplasmic membrane, there is space. This space is similar. Cell membrane is similar. Gram-positive also have cell membrane, gram-negative also have cell membrane. Membrane proteins are present in gram-positive bacteria as well as these are present in gram-positive bacteria. Membrane protein present in both. But if you can see here, there is only one difference. Cell wall of gram-positive bacteria is thick and the cell wall of gram-negative bacteria is very thin. And one thing, teichoic acid is present in gram-positive bacteria. Teichoic acid is not present in gram-negative bacteria. Outer membrane is present in gram-negative bacteria. It is not present in gram-positive bacteria. So you can draw this thing, this comparison. You have to transfer this thing into your notebook. Start from cytoplasmic membrane. Cytoplasmic membrane in both in gram-negative as well as in gram-positive microorganisms. Pre-plasmic membrane is there. Because we have not studied the pre-plasmic space right now. And after cell wall, we have to study the pre-plasmic space and cytoplasmic membrane. Just we are talking about. We have reached to study up to the cell wall.
So you can draw this please. बस रफ से बनाने इतना नीट एंड क्लीन, फिर घर में जाकर जब आप बना लेंगे वो मशीन क्लियर हो। बन गया, ठीक है। रफ सा स्ट्रक्चर बना दें, बाकी नीट एंड क्लीन बुक में जाकर आप इसको तफसील से बना सकते हैं। Okay, we have to see the cell wall of gram positive and gram negative bacterium, cell wall structure and gram staining, how it functions, gram stain technique, which we are going to perform today. This is the same slide which you have seen, which you have drawn, and this is the main structure. This is normal bacteria जो naturally present and that is present in form this colorless. Nothing is here, either gram positive, either gram negative. Without stain, they will be like this. First we will fix it and we will put crystal violet on it. All bacterial cells will appear violet form. After that we will add iodine, so it will make CBI complex. After that we will decolorize it. Add decolorization. No removal of crystal violet will be here, and here crystal violet will be removed. Why? Due to removal of this outer membrane. Due to removal of this outer membrane, ये remove हो जाएगी तो cell wall appear होगा. Again we will apply secondary dye, which is called counter stain or saffrani. It will attach to the bacterial cell wall. इसके साथ attach हो जाएगी और उसको pink appear करेगी. जबकि ग्राम पॉजिटिव के ऊपर ऑलरेडी क्रिस्टल वायलेंस अटैच हो चुका है, उसमें से कोई चीज रिमूव नहीं होगी. You have to perform this practical today. So, atypical cell walls. There are some bacteria, few exceptions are there. Few exceptions are there. They have atypical cell wall. No or very little cell wall material is present.
कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल या तो मौजूद नहीं है, अगर है तो बहुत थोड़ी मिकदार में, और उसके लिए सिर्फ एक ही ग्रुप अभी तक अपीयर हुआ है, दैट इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा. Mycoplasma are the smallest bacteria that can produce outside living cells. Sterol is the plasma membrane for protection. They have no cell wall. Just they have sterols on their cytoplasmic membrane. Due to that, they maintain their life. उसकी वजह से थोड़ी सी उनकी जो है सेल मेम्ब्रेन सख्त हो जाती है कंपेयर टू नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन, और वो उसको सर्वाइव करने के काबिल बनाती है इन्वायरमेंट में. माइकोप्लाज्मा. सो सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हैविंग atypical cell walls, having no cell wall, are very little cytoplasmic cell wall material. And the group which is prominent in this regard is mycoplasma. माइकोप्लाज्मा वो वाहिद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिनमें सेल वॉल मौजूद नहीं है, जिनमें सेल वॉल मौजूद नहीं है. वो कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं? क्वेश्चन अराइजेस हियर. उनकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में स्टेरोल्स मौजूद हैं कुछ, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को थोड़ा सा रिजिड बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो उसको सर्वाइवल के काबिल बनाता है, जो उसको प्रोटेक्शन देता है. माइकोप्लाज्मा ये सिर्फ एक ग्रुप अभी तक मिला है. और दूसरा ग्रुप है आर्किया, अनयूजुअल सेल वॉल. सेल वॉल मौजूद है लेकिन अजीब किस्म का, अनयूजुअल, नॉर्मल नहीं है. They have no peptidoglycan. Just at their outer membrane, proteins and polysaccharides. First one, mycoplasma. Atypical cell wall होता है, इसमें भी सेल वॉल मौजूद नहीं. दूसरा आर्किया. आर्किया उस एनवायरमेंट में मौजूद होते हैं जो नहायत एक्सट्रीम हो, जो नहायत एक्सट्रीम हो, या तो सर्दी ज्यादा हो या गर्मी ज्यादा हो या सैलिनिटी ज्यादा हो या एसिडिटी ज्यादा हो या समंदर के बॉटम में मौजूद हो जहां पर टेम्परेचर कम, न्यूट्रिएंट्स लेस. जहां पर एक्सट्रीम कंडीशन है, अनयूजुअल एनवायरनमेंट जहां पर मौजूद है, वहां ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं. बट दे हैव नो सेल वॉल, नो पेप्टाइडोग्लाइकन, जस्ट प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स आर प्रेजेंट. थर्ड वन, acid fast cell walls contain high concentration, 60% of waxy material outside the peptidoglycan. Mycolic acid prevent uptake of skin. जैसे इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मशहूर है सबसे ज्यादा. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी काज करता है, इसीलिए टीबी के मरीज को आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देनी पड़ती है. 6 से 9 महीने तक उसको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है क्योंकि वो मरता नहीं है. उसकी रीजन ये है कि उसकी सेल वॉल अनयूजुअल है, और उसको हमने किस ग्रुप में रखा है? एसिड फास्ट सेल वॉल. उनकी सेल वॉल के ऊपर they contain high concentration of mycolic acid. 60% mycolic acid होता है जो कि एक वैक्सी मटेरियल है आउटसाइड ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन. जैसे ये सेल वॉल मौजूद है
और इसके ऊपर एक वैक्सी मटेरियल, मोम टाइप का मटेरियल मौजूद होता है। वैक्सी एक मटेरियल मौजूद होता है जो 60% कंसंट्रेशन होती है उसकी, और ये है क्या चीज 60% वैक्सी मटेरियल। वैक्सी मटेरियल और एंड दैट इज कॉल्ड माइकोलिक एसिड। दैट इज कॉल्ड माइकोलिक एसिड। Mycolic acid that prevents the uptake of the skin। और ये वैक्सी मटेरियल है, बहुत ज्यादा सख्त होता है। इस तरीके से हम उठाते हैं, कोई गाड़ी सी चीज अगर हमने उठाई और इस तरह का कॉर्ड बन जाता है उससे, तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल को बहुत ज्यादा मजबूती से प्रोटेक्ट कर लेता है, इंट्रासेलुलर ग्रो करता है जिसकी वजह से। और ये जो वैक्सी मटेरियल है, इट कंटेन्स 96 कार्बन एटम्स। कार्बन आइटम इसमें मौजूद होते हैं, कम्प्लेक्स टाइप का मटेरियल मौजूद। एसिड फास्ट बैक्टीरिया, और इसमें बदनाम में जमाने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो ग्रुप है जो टीबी काज करता है, वो एसिड फास्ट में आता है। एसिड फास्ट स्कैनिंग, एसिड फास्ट स्कैनिंग की होती है, वो अलग प्रोसीजर है, उसको आप बाद में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, दिस वाज द सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब आप लोगों ने लैब परफॉर्म करनी है और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ।